rehearsing for this college, like this event. So, what was the idea basically for coming here? Well, it's here. We're here to entertain the students. It's a very important time in their lives when they're all having a great time together, studying, but at the same time also, I guess, just forming new relationships and partying. Farhan Akhtar ने कोई memories recall करी after, when he was rehearsing in front of students and they were of course cheering for you? Unfortunately, colleges की मेरी memories थोड़ी कम ही हैं क्योंकि मैं बहुत कम जाता था कॉलेज में. लेकिन now I'm making it up. I must say that Farhan Akhtar is the only actor who performance, he doesn't only have to act, he can do it, when singing also. So do you take that whole, your edgy feeling that, I'm an actor, मैं गा भी सकता हूँ and then I can entertain my fans? Well, I do enjoy entertaining people, whether it's through films or whether it's through music. That is something I enjoy. But I don't know how I'll think of it edgily. जब मैंने इनवाइट पढ़ा था कि फरहान अख्तर इज गोना परफॉर्म ऑन स्टेज फॉर द स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगा था कि वो शादी के साइड इफेक्ट्स में भी प्रमोशन कर रहे हैं. तो आर यू लाइक प्लानिंग टू प्रमोट समथिंग दिस पोडियम पे ये मतलब एक बहुत ही एक अलग मेरे लिए एक मेरी ज़िंदगी का एक ज़िंदगी का हिस्सा. मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आके अपने फ़िल्मों को प्रमोट करूँ. जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं वो म्यूज़िक सुनने आए हैं, मतलब वो कोई इश्तिहार देखने नहीं आए हैं. तो आई एम जस्ट हियर टू हैव फन विद देम एंड फॉर मी connecting with them directly is more important here, than talking to them about my work.